A convincing win then for Pakistan in this first T20 international against Australia. Pakistan managed to make 168 for 8 in their 20 overs, and we had a brilliant start from Saim Ayub at the top, making 40 in just 22 balls. Salman Ali Agha also playing a crucial knock of 39 in 27, and they set the tone at the top for Pakistan to make 168. Adam Zampa was impressive, picking up 4 wickets, and in response, Australia didn't really have any partnerships that went all the way. They managed to make 146, but really it was the spinners that did the job for Pakistan. Pakistan relying on Abrar Ahmed picking up 2, Saim with an all-round performance, and Pakistan winning this comfortably by 22 runs. Well, this is exactly the kind of start Pakistan would have wanted. You know, all eyes on that T20 World Cup, and this is the kind of preparation that they'd be hoping for, starting off on a positive note and winning this T20 international. We've got 2 more games to go, and I'm sure Pakistan will be looking to win those as well. With me, I've got a very, very special guest, and we'll start off with the man of the moment, because he's somebody who's bowled well, batted well, and has been doing really well as an all-rounder of late for us. I'm talking about Saim Ayub. And also with him, I've got Amir Sohail to really talk about the game, what happened, and just in terms of reflecting upon the good and the bad from today. Saim, thank you so much for joining us. पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो, क्योंकि ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए. फर्स्ट T20 इंटरनेशनल था, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, प्रिपरेशन के हवाले से it was important for Pakistan to win this. आपकी अपनी परफॉर्मेंस, यू नो, ऑफ लेट हमने देखा है इन द लास्ट 1 year और सो, आपकी बॉलिंग काफ़ी सामने आई है. एशिया कप में भी हमने देखा. इंजॉय कर रहे हैं बॉलिंग, बैटिंग पे तो मैं आऊँगी, बट बॉलिंग कैसा महसूस हो रहा है कि नाउ यू आर समबडी दैट पाकिस्तान रिलाइज ऑन? बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ, और यही कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ हो, बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग, उसको इंजॉय करूँ. बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमारे पास प्लान होता है, और चाहे बॉलिंग कोच की तरफ से हो या बैटिंग या फील्डिंग कोच की तरफ से, तो वो प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. सम टाइम वो कम होता है, सम टाइम वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पर कंसेक्यूटिव रहें, उस पर हम उस प्लान को बार बार करने की कोशिश करें. प्लान की आपने बात की, तो प्लान वैसे था क्या अगेंस्ट? हमने देखा है कि पावर प्ले में भी बॉलिंग होती है, फिर मिडल ओवर्स में भी होती है. कई स्पिनर्स आज हम देख रहे थे जैम्पा डेथ में भी करते हैं. तो ये जो डिफरेंट फेजेस हैं, आप अपनी इस तरह से बॉलिंग को किस तरह से प्लान करते हो टू बॉल अकॉर्डिंग टू द फेजेस? मैच बाय मैच होती है. जैसे आज हमें पता था कि कंडीशंस ऐसी हैं कि थोड़ा सा भी बॉल जब पुराना हो जाएगा तो इट विल हेल्प स्पिनर्स अलॉट, बट वी वांटेड टू स्टार्ट विद स्पिनर. सो मुझे रोल दिया गया था कि स्टम्प्स टू स्टम्प्स बॉल करनी है ज़्यादा, और अगर शुरू में हमें कोई विकेट मिल जाती है, स्पिनर को हेल्प मिल जाती है, तो वो क्योंकि स्टार्ट में विकेट मिलेंगी तो वो बाकी स्पिनर्स को फिर पावर प्ले के बाद हेल्प करेगा. तो मेरा रोल यही था कि मैं विकेट टू विकेट बॉलिंग करूं, बट आई डोंट थिंक कि मैंने उतनी अच्छी बॉलिंग की जितनी कर सकते हैं. बट आउट 2 मिल गए, वो हमारा आई थिंक जो प्लान था वो कामयाब हुआ, और आगे भी यही कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी पिच हुई जिसमें स्लो है और स्पिनर को टर्न मिल रहा है या हेल्प मिल रही है थोड़ी सी, तो पावर प्ले में उनके ज़्यादा से ज़्यादा आउट कर सकें. अच्छा आमिर, बॉलिंग तो हमने इनकी देखी, बैटिंग आज इनकी बहुत ज़बरदस्त थी. 40 किया. इन जो हम बार बार बात करते हैं T20 मॉडर्न डे बैटिंग की, कि इस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, पावर प्ले में ऐसी बैटिंग होनी चाहिए. आपको कैसी लगी इनकी बैटिंग आज? देखिए, जो मेरे लिए रिफ्रेशिंग था वो ये था कि इन्होंने अब सिंगल लेग भी करनी शुरू कर दी है. जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपको स्पेशली जब बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो, तो फिर जब आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होती हैं तो आप बजाय चौकों के गेंद को गैप में हिट करके बॉलर के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं. सो आई थिंक ये चीज़ मिस थी, और आज जो इन्होंने सिंगल्स की, देखें स्ट्रोक मेकिंग में तो हमें इनकी रेपुटेशन का पता है, इज गॉट ऑल द एबिलिटी इन द वर्ल्ड. अगर या उसके साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करते हैं तो ही कैन बी डबली डेंजरस. और नो लुक शॉट जो है आपकी काफ़ी आज इस एक चीज़ होती है इन्विजन करना, बट देन उसको एग्जीक्यूट करना. जिस तरह से आपने आज एग्जीक्यूट की, 2-3 दफ़ा हमने देखा, तो you're getting more confident at playing that? आई थिंक ग्राउंड में जब भी जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस तो लेके जाता हूँ अपने साथ, पर मुझे नहीं पता होता वो बॉलर कहाँ बॉल करेगा, तो इट्स ऑल अबाउट ऑटोमेटिक रिएक्शन, बट आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माय ऑल शॉट्स. ठीक है. और कंडीशंस का बताएं. नॉर्मली हम गद्दाफी स्टेडियम में आते हैं, तो इस दफ़ा जो हम सुन रहे थे वो यही था कि जी T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए कंडीशंस बनाई जाएंगी. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सर्फेस? जी बिल्कुल, आप देखें ना, जैसे पिछला साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुई, ट्राई सीरीज़ खेली हमने श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे के साथ, एंड नाउ दिस वन.
तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि स्लो विकेट बनाई जाए, और आपने देखा कि आज काफ़ी स्लो है. एज बॉल गेट्स ओल्डर तो वो और स्लो होता जाता है, और देन उसको बाउंड्री हिट करना मुश्किल है. तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट 10 ओवर्स कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया पे हम लोग प्रेशर डालेंगे तो ही उन पे प्रेशर आएगा, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो. जी आमिर, इनकी आज बॉलिंग भी जो हमने देखी, एक जो चीज़ नज़र आती है वो उनकी पेस वेरिएशंस हैं. जिस तरह से इनके पास जनरली काफ़ी ज़्यादा वो है. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट फॉर हिम टू हैव ऑल दो स्किल्स कि वो आगे श्रीलंका में आपको पता है वर्ल्ड कप है. देखिए, आपके पास अगर वैरायटीज़ हैं और अगर आपको वो यूज़ करनी आती हैं, देखिए आपके पास एज ए बॉलर गूगलीज भी हैं, फ्लिपर्स भी हैं, लेकिन अगर आप सही जगह पे गिराएंगे नहीं तो वो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा. और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप नए बॉल की बात कर रहे हैं, पावर प्लेस की, तो जब ये बॉल करते हैं बैट्समैन जो है चौके छक्कों के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं. उसमें जो इनकी वेरिएशन है, जिस तरह अभी इन्होंने वेरिएट किया, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बैट्समैन के लिए परेशानी होती है और गेंद को टाइम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. एक तो आपने गेंद को अर्ली मीट करना है, फिर अगर आपने उसको सही तरह रीड नहीं किया तो गलती की गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. स्लाइडर भी देखी है हमने, आपकी स्टॉक बॉल भी देखी है, और कोई वेरिएशन, कोई जिसे कहते हैं ना मिस्ट्री बॉल आ रही है आपकी तरफ से जो ये काफ़ी नहीं है? नहीं, फिर भी इनोवेट तो करता ही है. नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ऑलरेडी मुझे 4 चीज़ों पे काम करना पड़ता है. ऑफ स्पिन का एक्शन अलग है, कैरम का एक्शन अलग है, उसके बाद बैटिंग और फील्डिंग भी है. तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते रहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की हमेशा जगह होती है. अच्छा, ये बताएं कि माइक हेसन के अंडर एक चीज़ बहुत जो ऑब्वियसली नज़र आ रही है कि एक अप्रोच की मैं बात करना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव अप्रोच जिसे कहते हैं इंटेंट के साथ, मॉडर्न डे T2, ये दीज आर ऑल टर्म्स दैट वी कीप हेयरिंग अबाउट. ड्रेसिंग रूम में भी यही डिस्कशन होती है मैच में आने से पहले कि उनकी तरफ से क्या मैसेज होता है, बिकॉज ही इज़ क्वाइट अ सेंट्रल फिगर इन दैट ड्रेसिंग रूम. आई थिंक जो हमारे प्लान्स होते हैं अब फील्डिंग में, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हमने हर वक्त रेडी रहना है या बैकअप करना है चीज़ों को, तो उस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. अगर पिच का पार स्कोर हमने देखा है कि 160 है तो हमने 165, 170 या 175 बनाना ही बनाना है. हमने 155 नहीं करना है, बिकॉज वो वर्ल्ड कप में जाते वक्त हमारे लिए वो नुकसान है. तो हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी नहीं है. एंड देन रिजल्ट वो हमारे हाथ में नहीं है, बट उन चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. चलें, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर थॉट्स. Saim, we're not going to keep you here because you've got to go back, and of course another T20 international in just a day. So that was Saim Ayub for you, really talking about the variations and his pace variations. Apart from that, generally whatever he has up his sleeve as a bowler, and apart from that, his batting, which was really impressive today and really set the tone at the top for Pakistan. We're going to be taking a short break here on pitchside, and on the other side we'll be joined by Simon Katich. Well, we're back on pitch side, just discussing the Pakistan's win over Australia in this first T20 international. Fabulous win for them. Australia will be hoping to make a comeback in that second T20 international and really reflecting on where things went wrong. And to talk about where things went wrong, we've got Simon Katich here on pitch side. Kat, not the kind of start Australia would have wanted. Of course, we know it's not their first side, so to speak, but where would you attribute the loss to? Was it a case of few runs more they could have perhaps had, or was it really a case of poor bowling? How do you see it? Look, I think they'll be disappointed with the fact that a number of younger fringe players missed an opportunity tonight. I think, when you look at the batting, they got off to a very good start. It was pretty similar to where Pakistan were at the end of the power play, but Matt Shaw to be disappointed with his dismissal getting out the way he did. And so will Cooper Connolly, second ball, playing back to a ball that was too quick and too full. So there's a few dismissals there. Matt Renshaw with his run out. Mitch Owen backing up too far, getting, that's probably viewed as unlucky, but it happens a fair bit in this form of the game. So a number of them will be disappointed they didn't get a chance to bat a little bit longer out there and get exposed to these conditions more, because they're used to the pace and bounce of Australian wickets and have done very well there. But coming here is a different kettle of fish. So yes, it's one disappointing night. They only lost by 22 runs, so small margin. They were probably a little bit off the mark with the ball early on. I thought Pakistan got off to a flying start, but I think, Adam Zampa got them back into the game with his 4 wickets through the middle, and they clawed things back well, learnt the lessons well, taking a lot of pace out of the ball through the back end of the innings. But overall, they'll be disappointed, I think, more so with their batting tonight.
Speaking on Adam Zampa, he seems to be perhaps, one of the top bowlers in this particular format. He's been doing it for so many years for Australia. What does, in your opinion, make him so special as a leg spinner? Well, I think it's his ability to read the batter and the situation of the game. He knows he's coming into the game at certain periods to take a wicket. Today, it was to break that partnership between Ayub and Salman, which was going beautifully. They'd put on 74. Pakistan had all the momentum, and then he strikes in his first couple of overs. And then he builds up pressure. And a lot of it comes down to the batters not being able to find the boundary. But it's the variation of pace, as we saw there, going wider and slower to Usman Khan, doesn't give him any pace to work with. And I think it's just his experience knowing when to go fuller and straighter and get under the bat, but then also knowing when to getting out of the hitting zone, take it slower and wider. And on a track like that today, just held up enough. And I thought he used his wrong and his pace-off deliveries around that 80k mark really well. One thing I just want to add, for me, the main reason for his success is the control. He bowls googlies, flippers, top spinners. Whatever he thinks, he's able to land the ball in that particular area. And that's why he's such a dangerous bowler and an asset to have in your lineup. And more often than not, you don't associate control with leg spinners. So exactly. That is actually a very good point by you, Amir. But one good thing that's worked for Pakistan today that would perhaps make them a little more hopeful about their prospects in terms of batting is the skipper leading from the front. Salman Ali Agha was kind of struggling, not really sure where to bat, what number to bat. But it was good to see him score runs today. Yeah, and with him getting runs under his belt, his decision-making has improved as a captain. He's more involved. And he's very quick to make decisions. And see how he's using the spinners. I mean, if you have so many spinners in your lineup, at times you, as a captain, get confused when to use who and who to hold back. But he's been doing it absolutely brilliantly. But to just make a point about Australia, one thing, Aussie players have to learn. In Australia, pitches are true. There, you could actually afford to convert every delivery into scoring opportunity. But here, if you keep on trying to hit the ball out of the park, I mean, you cannot be consistent. And also in the T20 World Cup as well, Kat, you'll get different kinds of conditions. I mean, there are different parts of the world. There's in India and then there's Sri Lanka. But spinners will be in action. That's the one thing that we know for sure, that they will have a role to play. So how important is it for some of these young guns to come forward and negate that challenge which they'll have to face in Australia and in India and Sri Lanka? Well, some of them have had an opportunity here to try and impress, and they've missed that opportunity. They'll get more in the second and third games, depending on how they want to balance this team. Obviously, Mitch Marsh and Inglis missed out today, but I think in terms of the length today, the Pakistan spinners, and we saw it with Abrar, hitting that good length, which was challenging the stumps, bit of spin both ways. So the challenge for the Australians is not so much with the power game, it's going to be with the skills of rotating strike and being able to manipulate, hitting the pockets when the ball's not there to be hit to the boundary, as you rightly say, Amir. You can't blast every ball for 4 and 6 in these conditions because the quality of the spinners that are going to be going through this T20 World Cup are going to be high class. So the batters have got to have the skills to be able to manoeuvre the ball around and rotate strikes so they don't get the pressure building up after a couple of dots in and over. So I think that's the skill for this young Australian batting group in the next couple of games here. Parting thoughts, how happy are you with Pakistan's combination in this particular match where you had, Fahim Ashraf was sitting out and you had 2 seamers that they went in with, Agha played at 3, Babar at 4. Are you happy with this, with the numbers here? I think what Pakistani batting lineup has to realize, once they get a good start, quickly they have to decipher what sort of a total is going to be good enough for the bowlers to defend it. Today, they actually wanted to score more than 225 runs, kept on playing their strokes, and lost wickets, allowed Australia to make a comeback into the game. So they have to realize this. When you talk about Pakistani bowling lineup and the combination, I think faster bowlers, they were off the boil, and that is a concern. So these are the areas Pakistan need to improve upon.
All right, then you heard it from Amar Sohail and Simon Karich. But the action continues. It's a 3-match T20 International Series against Australia, as we've got an off day tomorrow, and then 31st of January start at 3:25 p.m. It's the Bank Al Falah presents Vigotel Mobile T20 Series, and we'll be joining you live from Lahore. Thank you so much, gentlemen, for your time once again and for all your useful insights here. And I hope you guys enjoyed today. Definitely we did as well. The spectators turned out in huge numbers. All the 3 games are completely sold out. So that augurs well in terms of entertainment for all the viewers that are watching. And I'm sure that the second T20 International is going to be equally exciting. Until then, it's goodbye from all of us.